The next we are going to discuss about is the displacement reaction. Now, what exactly do you understand by the double displacement reaction? The double displacement reaction is a reaction which takes place in the ionic salt solution. ये जनरली बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होते हैं और आयनिक सोल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्ट के उसमें से होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें क्या होता है। हमारे पास AB प्लस, यानी मैंने कहा ना आयनिक सॉल्यूशंस होता है, तो एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा और इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे यानी पानी में मिलाएंगे। और दूसरा सब्सटेंस होता है उसकी भी एक्वस सॉल्यूशन बनाई जाती है एंड दैट इज C प्लस एंड D माइनस. So we have got two ionic salts which is made into the aqueous solution. Now what happens here is in the ionic reaction the double displacement takes place. That means the positive of the first substance gets attached to the negative of the second substance and the positive of the second substance get attached to the negative of the second substance. There is exchange of the ions. Right? So this kind of the reaction is called as the double displacement reaction. The reaction where the precipitate generally is formed by the exchange of the ions between the reactant are examples of the double displacement reaction. है ना? इसमें generally एक का precipitate बन जाता है. तो इसमें आप देखेंगे कि अगर हमारे पास में देखो ये बहुत ही सुंदर सा प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में और यहाँ पर हमें सुंदर सा येलो कलर का गोल्डन येलो का प्रेसिपिटेट बनता है. तो the reaction that produces a precipitate can be called as precipitation reaction also. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली प्रेसिपिटेशन होता ही है. ठीक है. सो द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. एक एक्टिविटी से देखते हैं. हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है और एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट को ले लिया और दूसरा सब्सटेंस में हमारे पास में बेरियम क्लोराइड है, हमने दोनों सॉल्यूशंस को मिला दिया. जैसे ही मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है ना. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है. इसमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड हियर इज द सोडियम सल्फेट इन द एक्वस फॉर्म इज रिएक्टिंग विद barium chloride. So again that also is an aqueous solution. Both are colorless. The moment you mix them together, you get barium sulfate which is in the form of a white precipitate and you also get sodium chloride. Sodium chloride remains in the solution, right? So you will be getting the white precipitate. देखो ये इसकी आयन जरूर होती है लेकिन ये precipitate के रूप में बन जाता है. इसमें भी सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस होता है but it remains in the solution, right? So this is an instantaneous reaction. So this is an example of double displacement reaction, right? Balancing. करो 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 जल्दी बैलेंसिंग करो. सोडियम के दो एटम्स थे तो यहाँ दो डाल दिया. ठीक है. यहाँ पर अब क्लोरीन भी दो था तो ये भी बैलेंस हो गया. बेरियम का क्या कहना, वो एक ही था, यहाँ पर भी एक ही है और यहाँ सल्फेट की एक आयन है, यहाँ पर भी एक. बैलेंस्ड. ठीक है. तो चलिए इस प्रकार से बैलेंसिंग आप करते जाइए. बिना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए इनकम्प्लीट होता है. हमेशा बैलेंस करना. ओके. चलिए और एक एग्जाम्पल. बेरियम सल्फाइड is now going to react with zinc sulfate. Now what do you get? Barium sulfate which is a white precipitate and you also get zinc sulfide. Zinc sulfide does not form the precipitate. It is the barium sulfate which forms the precipitate. So this is also, you can see, the positive of the first substance, that is the barium sulfate, got attached to the sulfate, the negative ion of the second substance, and the positive ion of the zinc gets attached to the sulfide ion of the barium sulfide. So there is an exchange of the plus and minus between the substance, and such kind of the reactions are called as what? Double displacement reaction. Got it? Yeah. Another example. Copper chloride. ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा. कॉपर का कोई भी जो आयन होता है वो ब्लू कलर का होता है. पानी में डालो तो बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर आ जाता है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें कॉपर प्लस क्लोराइड नेगेटिव. Now I'm going to mix this with potassium iodide. Potassium iodide again is a colorless solution, and as potassium is positive and iodide is negative. Now there will be an double displacement reaction taking place. We'll get copper
iodide, which is a brown colored precipitate, and you also will be getting potassium chloride, right? Copper chloride or potassium iodide gives you cupric iodide and potassium chloride. Now you have to balance this reaction also. Kindly balance it. Make it 2 as potassium. So then it get balanced. So the precipitate जब भी लिखना होता, either you write it as solid or you put a arrow mark down. If you put an arrow mark down, it indicates that the precipitate is formed. अच्छा, ऊपर एरो करने से क्या होता है? गैस बनता है. इसमें कोई गैस नहीं बन रहा, but if you want to indicate that the gas is formed, you put an arrow up. And if you put an arrow down, it indicates that there is a precipitate which is formed. ठीक? Okay.